My name is Nafra Batul. I'm from district Kishtwar. I did my schooling from Islamia Faridiyya Higher Secondary School, Kishtwar. I did B in Electrical from Mahant Bachit Hussain College of Engineering and Technology, Jammu. My hobbies are writing Urdu poetry, singing Kashmiri songs, listening to ghazals and local Kashmiri music, and cooking Kishtwari cuisines. This is my fourth time that I'll be facing interview in the State Civil Services examination. I'm married and I have 2 kids. Are you working somewhere? No, sir, just preparing for this exam. So what was your goal when you were in 10th or 12th class? Sir, I always had civil services in the back So of why my you mind. went for engineering? Sir, because when I was studying in 12th class, these two professions, MBBS and engineering, they were considered to be the end of the world, sir. So I had to be graduate to be eligible for this state civil services examination. And side by side, I would get a professional degree also. So I went So for kind of a engineering. backup plan you have kept it for that. Sorry, sir? Engineering was your Yeah. backup plan. Sir, I had a professional degree side by side. I could have applied for that also, and I did apply for that. But some posts were advertised and then they were withdrawn. And there has been a process of privatization of PDD going on, so there hasn't been any advertisement since. So you always wanted to work for government, like a government job, or? Yes, sir, because we don't have Why? much developed private sector in the state, sir. Okay. So, like, if I'll say that, what is your goal today? sir, to be a good person, first of all, to be a good person and to serve the society, to give back to the society, sir. Nashra, please tell me about two of your weaknesses. My first main weakness that I consider is I'm very self-monitoring. I'm not satisfied with the. I'm not satisfied till I complete the work, and I'm satisfied that I have worked properly on something. So I consider it as a weakness, and to some extent, it is also a positive point because it makes me be more efficient in my work. And my other is I'm an introvert, ma'am. I have a problem communicating, but I'm working on it. So you feel being introverted is a weakness? How can you make it to your get across strength? to get across to someone? So to communicate to communicate, there is a problem Okay, there, but so- I'm working on it. So you get selected, for example. So do you think it will be a roadblock for your development Right, like professionally? Like I said, I'm working on it, and I'm sure I'll be able to overcome it. And I have been successful to a very great extent And how are you working on it? by communicating with people, discussing. In the beginning, I was not able to talk to strangers, but now when I am in a room of people, I try to talk to people. I try to communicate. Other steps have you done to overcome this? For example, to gain some fluency in my speech, I use I record my voice. I try to read loudly. So these are some of the steps that I try to discuss with my family, some political matters or any societal matters. I try to discuss. With my Okay. family. So you said you have 2 kids. Yes, How ma'am. old are they? My elder son is 9 years old and younger son is 7 years old. Are they introvert as well? I'm trying not to make them. How will you make them? It's No, something in I your mean, like part I of your said, I try to personality. discuss with my family, and when I say family, I discuss with my kids also. Like I'm trying, they don't become like me. Well, the weaknesses I have, I am trying not to. I'm trying that my kids don't have the same weaknesses now. Okay. Thank you. That's right. I include my family in discussions also. Okay. So, Mrs. Nasta, you have public administration as optional, and you seem to be a promising candidate. Have you read about about the recent case of Pooja Khedkar? So there was a controversy surrounding her selection. So you are a student of public administration. What is feudalistic attitude in bureaucracy? What is feudalistic attitude in bureaucracy? Feudalistic. Feudalistic. Sir, I'm sorry, I'm not able to understand the question. Okay. What is feudalism? So, like the some supremacy of some over others. Yeah, you can. Okay, let's talk about something else. What's rule of law? Rule of law is equality. No person should be above law, and law should treat everyone equally. Equal protection of law. So, do you know who gave this concept for the first time?
It was A.B. Dicey. or British Excellent. So which is supreme, rule or law? Law is rule of law. In your combined. opinion, Law is supreme, but law has to be equal for everyone. It has to be equally applicable to everyone. okay, so Urdu Shairi is your hobby, you write and read both, right? I write mostly. So- So I don't have time to read much. Okay, I read some got books. it. So what has been the contribution of women in Urdu poetry? Sir, there have been many women Urdu poets. For example, we have Parveen Shakir is one of the poet. I don't know much about the Urdu poets. There is one from Kashmiri Okay. women also Okay. have been poets. For example, we have Lalted. She used to write Urdu poetry. So their contribution has been that they have been an inspiration for other women also, and they have been poetry has been a form of communication for them to communicate their problem, because like we see women were not in the past also and now also were not heard that True. much. So it was a form of communication for them. So you mean to say it's a sort of vocation? It provides a platform where people can put forward the issues of women, Yes. their grievances, Yes, sir. the Whatever goes discriminations on they in there, face. yes, it is a form. For example, they are not expressed to talk to someone; they can talk through their poetry. Have you read Parveen Shakir's poetry? Sir, I have read some of the works. Okay, I'll recite one couplet if you can explain it for us, if that would be इनकी okay. Parveen Parveen Shakir? Shakir ji. सर पोइट्री पढ़ने से ज़्यादा मुझे पोइट्री सुनना पसंद है, लिसनिंग टू गजल्स। तो मेहदी हसन ने उनकी एक गाई थी, कुबकू फैल गई बात शहनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी वजीराई की। So about the discrimination faced by women, Parveen Shakir once writes, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा. Can you explain this to us? In what context she tried to write this? This is basically, so just for the discussion and for the members, this is about the stigma associated with the divorce of women. After divorce, man does not face problem. He easily moves on, he gets married, but there's that stigma associated with women. वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाए, मसला फूल का रहता है ना, फूल किधर जाए. Okay. So last question. Did you hear the Prime Minister's speech on Independence Day? We should be keeping tab of the current affairs. So in that speech, he said that time has come that we must move from a communal uniform civil code to secular uniform civil code, quote unquote. These were his words. Yes, sir. What's your opinion of implementing a uniform civil code across the country? Sir, in my opinion, uniform civil code, like it is related to personal laws. So there has to be a balance between the right to profession of religion by the people and uniformification of the code. So in my opinion, if uniforms, first of all, there has to be proper analysis by expert committees and experts whether it is the right time. Uniform civil code has to come, but if it is the right time to bring it, and when the expert committee gives a green flag, I think there should be proper consultation with the stakeholders. There should be involvement of the leaders of the various religions, and it should not be brought in a knee jerk, sir. There should be gradual process of bringing it, and also I think that codification of the personal laws is the first step till the uniform civil code is brought in, sir. Suppose it is right time to take a decision. Yes, sir. Will you support secular code? Sir, there are certain provisions of the personal laws which are interpreted as discriminatory. So, in order to rub off that discrimination from the society, there is a need. For example, so for what you example, have in mind that there is something discriminatory in so for Muslim example, personal law? For example, till the triple talaq case, the women, there was discrimination against women. Maintenance was not provided to women after divorce. Those were some provisions, and that was one case. In case of divorce, even today a debate is going on whether maintenance is to be provided for a fixed period or for a lifetime. Marriage is a contract. So, Once contract is over, what is the obligation of the parties? आप ही कह रही हैं ना maintenance वगैरह. जी sir. If it is a contract, they have agreed upon to certain conditions. Once that contract is over, जी sir. then there is no obligation of the other party. How it is Sir, discriminated? कोई भी contract जो है, it is signed on certain Under terms. Muslim law, marriage perhaps is contract, isn't it? जी sir.
दो सर तीन हर कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरी करनी है, द कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, वंस दोज आर गॉन तो फिर क्या ऑब्लिगेशन रहती है। एनीवे चलिए आपकी ये, आप मुझे बताइए, यू हैव कम फ्रॉम किश्तवाड़, जी सर। सूफियों का इलाका है ना, जी जी दो बड़े सेंट्स हैं। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सूफीज्म? सर सूफीज का सोसाइटी के जो वेल बीइंग में है काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। जैसे आपने कहा कि वहाँ के काफ़ी, दो ही नहीं काफ़ी सारे सूफीज हैं जो नहीं, फेमस दो है। तो मशहूर है ना। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी हाँ। जैसे वो बगदाद से आए थे। तो किश्तवाड़ की जो हालत है उस वक्त बहुत क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे यही जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हुआ करती थी, उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है सूफिज्म का हर I am not सोसाइटी talking में। about one particular saint. I am talking about the concept of Sufism. ये है, is it Islamic concept? सूफीज्म में हमारे पास पोएट्री, म्यूजिक वगैरह, डांसेस वगैरह, मतलब इट वाज अ कॉमन पीपल के साथ कनेक्शन का। क्योंकि पहले होता था कि जो टॉप ये होते थे सोसाइटी के, सूफीज्म से पहले जो सोसाइटी के हायर लेवल्स के लोग होते थे उनकी ज़्यादा बातें सुनी जाती थी, लैंग्वेजेस उनकी ज़्यादातर चलती रहती थी, उन्हीं के वर्क्स जो भी थे, जो आम आदमी था उनके पास पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक्स उनके लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड नहीं होती थी या वर्क्स नहीं होते थे। सूफीज्म एक हिसाब से कनेक्शन था उन कॉमन लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, उन कॉमन लोगों का और गॉड के साथ कनेक्ट होने का एक एक मीडियम सर बन के सामने आया था। Okay, so I have like few questions, then we'll finish the interview. Uh, One, you have done electrical engineering. So can you tell me like what is the like the contribution of Tesla to electricity, or the biggest contribution of Tesla? सर टेस्ला, एक वॉर ऑफ करंट्स टेस्ला का कंसेप्ट है, एसी और डीसी का जो कंसेप्ट है सर, डीसी और एसी के बीच में जो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सर एसी का डिफरेंस, एसी करंट जो है इट फ्लोज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, वेयर एज डीसी फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर आसान भाषा में समझाएं तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर मेन जो अगर आसान भाषा में हम देखें, ट्रांसमिशन के इसमें आ जाता है प्रॉब्लम, एक डिफरेंस कि एसी जो इट इज इजी टू बी ट्रांसमिटेड, क्योंकि उसमें जो है लॉसेस वो कम होता है एज कम्पेयर टू डीसी। प्लस एसी कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन, डीसी जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं की जा सकती, कि आपको जो वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिल सकती है। इसलिए एसी का यूजेज अगर देखा जाए तो डीसी के मुकाबले में पहले तो ट्रांसमिशन ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाती है, और यूजेज भी एसी का है कि बड़े बड़े कामों के लिए किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए। डीसी का यूजेज छोटी सी चार्जिंग वगैरह के लिए डीसी का यूज होता है सर। ओके, आप शायरी की बात भी कर रहे थे, तो सर ने कुछ कहूँगा कि इमोशनल लेवल पे पूछा, मैं थोड़ा टेक्निकली पूछना चाहूँगा दैट व्हाट इज लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट शायरी, व्हाट इज रदीफ, काफिया एंड बहर? सर कंसेप्ट है पर क्लियर इस वक्त क्लियर वर्ड्स में नहीं बोल पाऊंगी, Okay. मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी सर। डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे? जी सर। Okay. How many books you have read which were not in your syllabus? सर ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं था, आई हैड अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, साइड बाय साइड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, तो टाइम नहीं मिला कभी। तो मोस्टली पोइट्री जो है ये मेरा स्ट्रेस रिलीविंग नहीं, स्कूल टाइम पे भी नहीं? सर स्कूल जो ही सिलेबस का जो होता था सर, वहीं से पोइट्री में इंटरेस्ट शुरू हुआ। Okay. और जैसे मैंने कहा कि पोइट्री पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद है सर। ठीक है, सही जी थी। मुझे बताइए, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन कौन सा जी है? सर, ऑपरेशनल इस वक्त दूल हस्ती प्रोजेक्ट है हमारा, अच्छा। और अभी अंडर डेवलपमेंट पकल डूल प्रोजेक्ट है, कीडो क्वाड प्रोजेक्ट है, रेटली प्रोजेक्ट है। करथाई रेडली चल रहा है अभी उसका काम रेटली शुरू? प्रोजेक्ट हाँ, रेडली सर, प्रोजेक्ट उस का पे that थोड़ा was जी नहीं, अभी कैंसिल हो ऑपरेशनल गया नहीं था हुआ ना है सर, बीच में। ऑपरेशनल नहीं है सर अभी। उसका चल रहा था इंडस वाटर ट्रीटी जो, उसके तहत ऑब्जेक्शन चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उसकी वजह से वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। आप ये बात कर रहे थे टेक्निकल सब्जेक्ट, ये ट्रांसमिशन लॉस जो बात हम कर रहे हैं ना, जी सर। इस वक्त हमारे स्टेट में हैव यू एनी आइडिया कि हमारा ट्रांसमिशन लॉस कितना होता है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, मुझे पता है कि कैसे हमारे पास होते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉज होते हैं सर, वो बहुत सारी बेसिस पे होते हैं। एक तो हो गया कि हमारा जो आउटडेटेड इक्विपमेंट है उसके रेजिस्टेंस की वजह से एक फार्मूला होता है जिससे कैलकुलेशन होती है, प्लस कमर्शियल लॉसेज होते हैं, दे इंक्लूड फॉल्ट इन बिलिंग या कलेक्शन ऑफ नहीं, द मैं ट्रांसमिशन लॉस की बात कर रहा हूँ।
जी सर। ट्रांसमिशन जी परसेंटेज अगर आप परसेंटेज बता क्या है, सकते कोई हैं। अंदाजा है? सर परसेंट, सॉरी सर। Anything more? Thank you. You have given 3 interviews earlier. This is the third or fourth one? Okay. So what we feel कि there are certain things which you need to work upon. Like कुछ चीजें तो अभी मैं कहूँगा कि थोड़ी हाथ से निकल जा चुकी हैं because if you want, आपने अगर बचपन से सोचा था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो न्यूज़पेपर बुक्स वो तो आपकी जिंदगी का हिस्सा उसी वक्त बन जाना चाहिए थे because it gives you the deep knowledge. ठीक है, आजकल जो ये शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है ना, इसमें आपको सुपरफिशियल नॉलेज जरूर मिल जाती है बट एक्चुअल नॉलेज कभी नहीं मिल पाती बिकॉज जैसे आपने शरिया लॉ शायद पढ़ा नहीं है तब, नहीं तो आप तलाक के इस इशू को, क्योंकि ये जो ट्रिपल तलाक है ये शरिया का पार्ट है ही नहीं, ये तो बिद्दत मानाता है इन मेनी मुस्लिम कंट्रीज, ये है भी नहीं, इट वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ शरिया लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि असली तलाक कैसे दिया जाता है, उसके क्या शर्त होते हैं, शादी में क्या महर क्या है, बाकी क्या है, वो कैसे, जो सर वाज ट्राइंग टू लाइक टेल यू अगेन एंड अगेन बट आपने वो कैच नहीं किया बिकॉज शायद आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं। तो यू नीड टू रीड अ लॉट, ठीक है, एंड गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू यू, लाइक पोएट्री इज रिलेटेड टू यू, और जो भी विमेन इश्यूज आर रिलेटेड टू यू, जो भी मतलब सवाल पूछेंगे ना, फिर अगर देयर इज अ वुमेन, उससे वुमेन रिलेटेड इश्यूज पूछे ही जाते हैं और आपको उन पे पकड़ होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। योर कम्युनिकेशन वाज गुड, योर ऑनेस्टी वाज गुड, बट दैट इज नॉट इनफ, ठीक है, यू नीड टू बिल्ड अ राइट केस फॉर यू, ठीक है। तो आप जब सेल भी कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली होना चाहिए। जब वी वर टॉकिंग अबाउट एसी और डीसी आल्सो, आप उसमें पूरी तरह क्लियर नहीं आए, मे बी द एवरी पर्सन इज नॉट, जो बोर्ड पे हो वो सब टेक्निकल ना हो, your answer should be as easy as possible so that understand ki what is the difference by giving example. So there was no example attached to that, so that layman's maybe language, maybe interview so में that 5 everybody लोग can होंगे, relate. 5 में से एक टेक्निकल है जिसने सवाल किया, Your rest answer three should are- be in a way कि even a non-technical बिल्कुल। person like me or so उसके लिए कि अच्छा एग्जांपल can साथ relate. में अटैच कर दिया जाए तो उससे क्या example, हाँ, you should consider you are explaining it to a घर layman. की कोई एग्जांपल दे दीजिए, बिल्कुल। घर में एसी And you कहाँ have पे है, endured a DC कहाँ पे? lot. You have good confidence. आपका बोलने का तरीका अच्छा है, थोड़ा सा आप डैप पे काम कीजिए, आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड इन इंटरव्यू। इन्होंने सम अप किया, आपको सबसे बड़ी जो कमजोरी है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये जो आपने सूफीज़म की बात की, शरिया की बात की, ट्रांसमिशन लॉस की बात की, आपको यू हैव टू गेन द नॉलेज, ये क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये इनोवेशंस बारे में। इस्लाम है ना, इस्लाम में भी इनोवेशंस आ गई, बट वन वी आस्क यू टू टॉक अबाउट द इस्लाम, आपको इनोवेशन थोड़ी बतानी है, इनोवेशन दैट इज समथिंग डिफरेंट। पहले आपको इस्लाम के या आपको कहेंगे हिंदुइज्म की कॉन्सेप्ट क्या है, सिखिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, यू शुड बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, बाकी आप की स्किल्स अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ट्राई टू मेक कॉन्सेप्ट्स क्लियर। आपने लिखा है पोएट्री राइटिंग, इसका मतलब आप शायर हैं, शायर को तो फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, या तो आपको लिखना ही नहीं है, ये दावा ही नहीं करना है। जब दावा किया then you will have to prove yourself. बेसिक टर्मिनोलॉजी व्हाट इज तखल्लुस, सर ने टर्म्स पूछी, तो एक बेसिक सेंट जो स्ट्रक्चर होता है ना उर्दू पोइट्री का, उसमें जो टर्म्स है वर्क ऑन देम, और विमेन कौन कौन सी मेजर पोइट्स रही है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या अभी कंट्रोवर्सीज है, क्या क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। आप डायरेक्ट अगर आप काम करेंगे, आपकी इतनी अच्छी एंड्योरेंस रही है, इतने अटेम्प्ट्स हैं, दे कंसीडर दिस, अगर आप थोड़ा डायरेक्ट पे काम करके आई एम श्योर यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू। Thank you. God bless you.